Good morning, everybody, all the participants. I think most of you are already very experienced of the level of SI to DYSP. Some of you are already working as OC also, SDPO also, and most of you have completed 20 years, 15 years, 30 years services. So today our topic is on human rights, and I have been given topic on introduction of human rights and protection of human rights acts. So I have divided this into broadly two categories. First one is introduction to human rights, and it will consist of 37 slides, and we'll try to finish it in 55 minutes. So it is also again divided into four subgroups: history and concept of human rights, 4 slides, and most importantly B, Universal Declaration on Human Rights 1948 in about 10 slides, and coming back to our constitutional provisions on human rights, which is also very important, 1950. It is in 16 slides. I will elaborate more on right to life, because human rights mostly revolve around right to life. And then D, international covenants regarding human rights. There are mainly 2 covenants on human rights. It will be covered in 7 slides. And then we have our own Human Rights Act 1993. There I'll just give one slide on important provisions, and then as for the topic given to me, we'll be talking about composition and function of National Human Rights Commission in 4 slides, and then C would be composition and functioning of state human rights commissions in 2 slides in 6 minutes. And thereafter we'll try to save around 15 minutes out of 80 minutes given to me for interactive session. So while we proceed further, I request all of you to please note down your doubts so that we can discuss within this 15 minutes period. Thank you. Now we'll proceed to concept of human rights. We can say the origin of human right concept started much beyond Christ also. In 539, Cyrus was the king of ancient Persia. Do you know what is Persia now? It is Iran, and conquered Babylon. Babylon is now Iraq. But he freed all the slaves, declaring that all people had right to choose their own religion and establish racial equality. And his decrees, his orders, were recorded on a baked clay cylinder in their own cuneiform script. This ancient Cyrus cylinder is now recognized as the world's first charter of human rights. You should understand that. It is translated into 6 official languages of the United Nations, and its provisions are contained in first 4 articles of the UNHR, Universal Declaration of Human Rights 1948. From Babylon, from Iraq, the idea of human rights spread to India, Greek and Rome. Some of the most important documents regarding human rights are Magna Carta 1215, English Bills of Rights 1689, French Declaration, and also sometimes called French Revolution 1789, US Constitution and Bills of Rights 1791. These are very important documents from where we have taken most of the articles of human rights, most of the sections of human rights which are contained in various international covenants
even in our own constitution and in the Universal Declaration of Human Rights. Now coming back to what is the meaning of human right. The belief that everyone, only because of his being a human, being a man, is entitled to certain human rights. Its concept is fairly new, but roots lie in various traditions and documents of many cultures. And the Second World War, 1939 to 45, was the catalyst, was the main reason for bringing the concept of human right into the global stage and into the global conscience. You know, during this Second World War, about 6 million Jews and many people like homosexuals, persons with disabilities were exterminated, were killed by Nazi Germany, and this horrified the world. Please keep your sound mute, please. And those guilty of crime against peace, crime against humanity, or war crimes were tried and punished. Therefore, governments all around the world committed themselves to establishing this United Nation, for establishing international peace and preventing conflict, and to ensure that no one is unjustly denied life, freedom, food, shelter and nationality. जैसे हमारा फिल्मों में डायलॉग होता है ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये बहुत जरूरी है. Next slide. Therefore, member states of the United Nations pledge to promote respect for the human rights of all, and they established a commission on human rights for drafting a document to spell out the meaning of fundamental rights and freedom proclaimed in the Charter. The commission was guided by Miss Roosevelt. She was the wife of President Roosevelt of America. And on 10 December 1948, Universal Declaration of Human Rights was adopted by the 56 members of the United Nations. Therefore, as per their charter, as per their definition under the Universal Declaration of Human Rights, term human right includes all those rights which are inherent in human beings. That means human rights are born with you. As you are born to, you come to this world, you come with human rights. Irrespective of caste, creed, religion, race, sex, color, language, nationality, or other status. Human rights are the natural rights of the human race, and hence they are also called as natural rights or basic rights or even fundamental rights. We'll come to our Constitution, Part 3, where fundamental rights or these rights are, human rights are included in our Constitution. Next slide. There are certain differences between human rights and other ordinary rights. Human rights are born with you. Human rights are not created through legislation or act, and human rights cannot be amended. Ordinary rights are acquired by some acts or event, such as purchase. आप जमीन खरीद सकते हैं, and you have right over the land. You inherit properties from your parents, grandparents or relatives, and you have rights over those properties. You enter into contract with
any other person, and you have rights. But human rights are not acquired, nor can they be transferred. You cannot transfer your human right. Human right cannot be disposed of. Human right cannot be extinguished by any act or event. And duties of protecting human rights fall on the government, not on public authorities, not on public. But other rights are to be protected by individuals. In India, the Protection of Human Rights Act was enacted for creating institutional mechanism for better protection of human rights. हमारा जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 है, उसमें सेक्शन 1D में डिफिनीशन ह्यूमन राइट्स का ऐसा दिया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. कोट सेक्शन 21D. ह्यूमन राइट मीन्स द राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी and dignity of the individual granted by the Constitution or embodied in the international covenant and enforceable by courts in India. Though in the first sentence we stated that human rights are not created through legislation and are not subject to amendment, but here in the last sentence we have seen that these are granted by the Constitution or embodied in the international covenant. Yes, human rights have been listed, enumerated, and they have been codified in various international covenants and even in our Constitution, and also we have our own protection human rights acts. Next slide. Next slide, we come to Universal Declaration of Human Rights. This is a milestone document in the history of human rights. It was drafted by representatives from different legal and cultural backgrounds from all regions across the world. Declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris. This Universal Declaration of Human Rights was proclaimed by UN General Assembly in Paris on 10 December 1948. Resolution number is 217A, as a common standard of achievement for all people and all nations. For the first time, it stated that fundamental human rights must be universally protected. And now, connection to today. Recording in progress. And now, this Universal Declaration on Human Rights has been translated into more than 500 languages of the world. The Universal Declaration of Human Rights consists of 30 articles, and most of these articles are now parts of Constitution of many of the countries of the world. These 30 articles of UNHR can be classified into 4 categories. Number 1, general, article 1 and 2. Number 2, civil and political rights, article 3 to 21. Of these 4 categories, this civil and political right, second category, civil and political right, article 3 to 21, these are the most important rights, and all these rights are included in our Constitution under Part 3 as fundamental rights. Economic and social and cultural rights, these are mostly in our Directive Principal State Policy, Article 22 to 27, and concluding Articles 28 to 30. Next, we'll broadly and state about the provisions under various articles, but we'll go fast because we'll speak in details in our fundamental rights or the constitutional provisions. Article 1, Article 2, Article 3 and Article 4, these were included in Cyrus cylinder of 539 BC that I told you earlier.
King Cyrus. Article 1. All human beings are free and equal in dignity and rights. Article 2. All are entitled to all these rights and freedom given in the declaration without distinction of any kind, without any discrimination. Article 3. Most important is the right to life, liberty and security of person. Article 4. No one shall be held in slavery or servitude. Article 5. No one shall be subjected to torture or cruel or inhuman or degrading treatment. Article 6. Right to be recognized as a person before the law. Everybody is a person. Article 7. All are equal before the law and entitled to equal protection of the law. We have all these in our constitution. Right to life is given. Article 3 is given in our Article 21, like that. Article 7 is given in our Article 14, right to equality. That will cover in our constitutional provisions of human right. Next slide. Article 8. Right to an effective remedy. That means no one shall be punished, or your fundamental rights or your human rights cannot be violated. If anyone violates, you can go to court. Article 8. And in our constitution we have Article 32, right to constitutional remedies, and also 226. Article 9. No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile. Article 10. Everyone is entitled to fair and public hearing. Article 11. You have right to be presumed innocent until proven guilty in a public trial. This is also provided in our constitution and also CRPC. And Article 11.2. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence. This is called protection against ex post facto law. That means you cannot be punished for any offence which was not an offence when you commit that act. The act did not constitute an offence. The act was not an offence when you commit it, but it may be an offence today, but you cannot be punished for that. And you cannot be imposed heavier punishment. Like in rape case, earlier punishment was say 10 years. Now it is life imprisonment after 2013. So before, if the act was committed before 2013, he will be punished as per the provision existed at that time. Punishment existed at that time. Next, this we'll discuss in detail in our constitutional provisions. Next, Article 12. You have right to privacy and no one can interfere with it. And Article 13, right to freedom of movement. We have also Article 19. Article 13.2, you can leave your country, any country, and return to your country, all free. But obviously, you must follow certain procedures, like having a passport or an like that. Article 14, you have right to seek asylum from prosecution, except in cases of prosecution generally arising from non-political crimes. That means if there is a political crime or political harassment, you can go to any country, seek asylum there. Article 15, you have right to nationality and also right to change nationality, but yes, obviously as per procedure.
Article 16. Men and women of full age, grown up men and women, say in India we have 21 and 18 years, they have right to marry. Article 17. Right to own property alone as well as in association. That means you can own property singly or jointly. Article 18. Freedom of thought, conscience and religion. We have also this freedom of religion. Article 19. Freedom of opinion and expression. This also we have in Article 19, same article. Next, Article 20. Freedom of peaceful assembly and association. These all are included in our constitution. Article 21. You have right to take part in the government. In India, all above 18 years have right to choose the government. Right to vote. Article 21(2). Equal access to public services. Article 21(3). The will of the people shall be the basis of the authority of the government. That means will of the people will determine who will govern them. And there shall be periodic and genuine elections through universal and equal suffrage held by secret vote. Article 22. Right to social security. That means there must be security of economic, social and cultural rights. Next, please. Hello. Article 23. Right to work is granted there. Article 23(2). Right to equal pay for equal work. Everybody has right to equal pay for equal work. Hello. And then Article 3. Right to just and favorable remuneration for himself and his family, and existence worthy of human dignity, and supplemented if necessary by other means of social protections. You have Article 23(4). You have right to form and join any trade unions. Article 24. Everyone has right to rest and leisure also, including reasonable limits of working hours and periodic holidays with pay. In India, working hours is generally limited to 8 hours a day, and we have periodic holidays like Saturday and Sunday. Next, please. Next. Hello. Next slide. Polita, next slide please. Can you hear me? Yes, okay. Yes, okay. Article 25. Right to standard of living, educate for health and well-being of himself and family. इसमें है हमारा जो फिल्मों में डायलॉग मिलते रहता है, इंक्लूडिंग फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, रोटी, कपड़ा और मकान, एंड इसमें और एक तो दिया एंड मेडिकल केयर. ये सब आपको राइट है. मदरहुड एंड चाइल्डहुड का भी स्पेशल केयर एंड असिस्टेंस एंटाइटल है. आर्टिकल 26 भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरीवन हैज राइट टू एजुकेशन. एजुकेशन फ्री होना है, एटलीस्ट इन द एलिमेंट्री एंड फंडामेंटल स्टेजेस,
And elementary education must be compulsory. Technical and professional education shall be generally available, and higher education shall be equally accessible to all. ये है. And next slide. Next slide, please. Kolita. Yes. Article 26(2). Education shall be directed to the full development of human personality and for strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. And parents have the right to choose the kind of education for their children. Article 27. You have right to participate in cultural life and advancement and its benefit. Right to protection of moral and material interest. Article 28. Everyone is entitled to social and international order in which the rights and freedoms set forth in this declaration can be fully realized. Next, ये लास्ट है हमारा 2 आर्टिकल्स. सी आर्टिकल 29 में दिया है not only rights. See, we have fundamental rights also, we have fundamental duties also. Similarly, Article 29 says that everyone has duties to the community. So you have fundamental duties also. And while exercising your rights, you must ensure that you are not disturbing rights and freedom of others. And your rights can be subjected to such limitation so that you do not disturb others' right or for just requirement of morality, public order and general welfare in a democratic society. And Article 29(3) जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में राइट्स एंड फ्रीडम जो दिया है cannot be exercised contrary to the purpose and principles of United Nations. जो purpose principle है यूनाइटेड नेशन का, जैसे पीस है, मतलब पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, वो सब को खिलाफ में आप एक्सरसाइज नहीं कर सकता है. और आर्टिकल 30, this nothing in this declaration may be interpreted as implying for any state, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth. ये है, आप इसको इंटरप्रेट इस तरह नहीं कर सकता है कि इसमें जो राइट्स एंड फ्रीडम दिया है उसको डिस्ट्रक्शन हो. Now, next slide, please. Next slide, please. C में आ जाओ. C में constitutional provisions on human rights. See, today we'll be concentrating more on this because this consists of 16 slides and very important. And you know, luckily, when United Nations General Assembly was proclaiming Universal Declaration of Human Rights, India was also out of the 56 countries who signed it. And India was drafting the constitution. When in 1948, Universal Declaration of Human Rights was adopted, India was drafting its constitution. And it is very obvious that many of the provisions of Universal Declaration of Human Rights were included in our constitution. Many of the provisions were patterned on the Universal Declaration of Human Rights. Our draft constitution was approved by the Constituent Assembly on 26 November 1949. You will find this date in our preamble. On this day, 26th of November 1949, like that. And it came into force on
26 January 1950. Part 3 of the Constitution provides fundamental rights which are similar to the civil and political rights provided under the Universal Declaration of Human Rights 1948 and International Covenants of Civil Political Rights 1966. We can divide the fundamental rights, constitutional provisions of human rights, into 6 broad categories. Number 1, right to equality, Article 14 to 18. Right to equality has 2 parts that we'll discuss later. Right to equality means equality before law and equal protection of law. Second group would be right to freedom, Article 19 to 22. This is very important. Freedom means freedom of speech, freedom of expression, freedom of opinion, freedom of thinking, and also freedom of your body and freedom of your life, right to life. Third group, right against exploitation. Fourth group, right to freedom of religion. Fifth group, cultural and educational rights. And sixth group would be right to constitutional remedy. Here it is wrongly written. It is not constitutional remedy, it is constitutional remedy. Now let us come to the first group, right to equality, Article 14 to 18. Article 14, right to equality before law, is available to both natural and legal persons, citizens also and foreigners also. Right? You please remember, right to equality before law is available to both foreigner also and legal and natural person. Natural person means human being, and legal persons means like any organization, any company. Article 14 embodies the general principle of equality before law and prohibits unreasonable discrimination between persons. Unreasonable discriminations means reasonable discrimination is allowed. Article 15, prohibition of discrimination mainly on 5 grounds. Article 15 prohibits discrimination mainly on 5 grounds: religion, race, caste, sex, or place of birth. Article 16 guarantees equality of opportunity in matter of public employment. 17 abolishes untouchability. 18 abolishes titles, which is not a military or academic distinction. पहले जो नवाब है, राजा है, वो सब टाइटल अभी नहीं होगा, लेकिन यस कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, आईजी, डीजी, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब अभी होगा. Now we'll discuss in detail. Right to equality का मतलब है right to equality before law and equal protection of law. ये 2 चीज होता है right to equality में, equality before law and equal protection of law. And these rights are not just ideal right but legal equality. Not ideal equality but legal equality. Equality before law is a negative concept. It means a court administering justice. That means a court, while hearing a case, is not concerned with the state or position of the parties appearing before it. It means there will be no any special privilege in favor of any person. All will be treated equally. However, equal protection of law is a more positive concept. It means equality of treatment in equal circumstances, or in other words, like shall be treated alike. This is a more and more meaningful equality before law. Right to equal protection law. Article 15 states not to discriminate on the 5 grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है
making any adverse distinction from others. Number 2, right to freedom. Right to freedom बहुत इंपॉर्टेंट है. यह हमें काफी आपका आर्टिकल 1 है जहां में बहुत बढ़िया आपको फ्रीडम दिया है. लेकिन आर्टिकल 19(1) all are subjected to some clauses, some conditions. Freedom of speech and expression 19(1)(a) में दिया है. B में दिया है to assemble peacefully and without arms. C में दिया है to form associations or unions. D में दिया है move freely throughout the territory of India. E में दिया है reside and settle in any part of the territory of India. Obviously, all are subjected to certain conditions. F है to practice any profession or any occupation, trade or business. Next slide. Next slide please. Article 20 में आइए. Article 20 में आइए please. कविता Article 20 में आइए. हाँ. Article 20 is very important. Article 20 में आपको 3 चीज मिलेंगे जो हमारा पुलिस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट लॉ जो पहले मैंने बताया. ये आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस. आर्टिकल 20 along with 21, 22 प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ पर्संस. जो हमारा बदन है उसका फ्रीडम प्रोवाइड करता है. ये these rights article 20, 21, 22 are available to all persons including legal persons and including non-citizens, I mean foreigners. Article 21 पहले मैंने जब बताया प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ एंड आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपार्डी जो हमारा पुलिस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, आप लोग याद रखिएगा. आर्टिकल 20 का 3 में प्रिविलेज अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम आते हैं व्हाट इज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ एंड प्रोटेक्शन. इसका मतलब है जैसे मैंने पहले बताया नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट एज चार्ज एन ऑफेंस nor be subjected to penalty greater than that which might have been inflicted under law in force at the time of commission of the offense. आज आपने कोई क्राइम किया और उसका पनिशमेंट अभी 10 साल है एंड आपका ट्रायल हो गया 2025 को और उस टाइम तक उस लॉ को अमेंड करके 20 इयर्स हो गया पनिशमेंट. लेकिन आपको 20 इयर्स का पनिशमेंट नहीं देगा. ट्रायल का टाइम वो पनिशमेंट था, लेकिन आप जिस टाइम वो आपने क्राइम किया आज का दिन में 10 साल का ही सजा होगा. और एक तो ये है दैट मींस यू शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू पेनल्टी हायर देन व्हिच वाज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम. और एक तो ये है और दूसरा है आज आपने कोई एक्ट किया लेकिन वो एक्ट कोई क्राइम में नहीं है अंडर एनी लॉ इन इंडिया. लेकिन से आफ्टर 5 इयर्स वो जो आपने एक्ट या कॉन्डक्ट किया वो अगर कानूनी तौर पे एक क्राइम बन जाता है 3 साल का या 2 साल का सजा हो जाता है और उसके बाद आपका ट्रायल होता है तब भी आपको उसमें सजा नहीं दे सकता है कि ये एक्ट जो है सजा का हकदार है, क्योंकि जब आप उस एक्ट या ओमिशन को कर रहे थे उस टाइम वो क्राइम नहीं था. ये है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. चलिए नेक्स्ट. आप लोग म्यूट कर दीजिए. मेरे को इधर में आपका आवाज आ रहा है.
मुझे डिस्टर्ब हो रहे। काइंडली म्यूट योरसेल्फ। हेलो हेलो एवरीवन, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, जल्दी जल्दी चलते हैं प्लीज। हेलो हेलो, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कोलिता साहब, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कोलिता साहब, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नहीं, बैक बैक, थोड़ा बैक। प्रीवियस वन, प्रीवियस वन, प्रीवियस वन, प्रीवियस वन। आप जंपिंग मार दिया। प्रीवियस वन प्लीज। हाँ, नहीं ये भी नहीं है। हाँ, यस, दिस वन। An ex post-facto law is a law which imposes penalty retrospectively, यानी कि retrospective डेट मतलब पुराना डेट से अगर लॉ बनाता है वो आप पर लागू नहीं होगा। और ये है ऐसे लेजिस्लेचर यानी कि द पार्लियामेंट और द असेंबली कैन enact both prospective एज वेल एज रेस्पेक्टिव लॉज। ये जो हमारा पार्लियामेंट है और असेंबली दोनों लॉ बना सकते हैं फ्यूचर के लिए भी और पुराना डेट से भी इफेक्ट होगा बोल के। बट आर्टिकल 20 क्लोज 1 प्रिवेंट्स लेजिस्लेशन टू मेक द क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। और ये जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट-फैक्टो, इसका दो पार्ट है। पहले ऑलरेडी मैंने बताया, retrospective imposition of criminal liability and retrospective enhancement of criminal liability, ये दोनों को अगेंस्ट में प्रोटेक्शन है। लेकिन ये जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट-फैक्टो लॉ इज अवेलेबल ओनली इन क्रिमिनल मैटर्स, इज नॉट अगेंस्ट सिविल लाइबिलिटी और रिड्यूस पनिशमेंट। और हाँ, ये क्रिमिनल लॉ में the assembly or the parliament can reduce punishment retrospectively, वो आप पर लागू होगा। लेकिन अच्छी बात है, आप जब क्राइम कर रहे थे वो 10 साल का सजा था, लेकिन अमेंड करके वो 5 साल का सजा हो गया, तो फिर उसमें आपको 5 साल का ही देगा, 10 साल का नहीं। आर्टिकल 20 क्लोज टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सब बोलता है डबल जेपर्डी, एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं होगा, 2 बार प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। ये ही है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपर्डी। द प्रिंसिपल अंडरलाइन द क्लोज इज अफ्ट्रेपोइस, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल कन्विक्शन। इट इज ऑल्सो कंटेन इन आवर सेक्शन 300 CRPC. This rule was incorporated by 5th Amendment of American Constitution, and it says no person shall be twice put in jeopardy of life or limb. ये है आपका इंपॉर्टेंट वाला। और उसके बाद आर्टिकल 20 क्लोज 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको आपका खिलाफ अपना खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। ये है protection against testimonial compulsion of self-incrimination. That means you cannot be compelled to be a witness against yourself. One cannot be compelled to be a witness against himself. That means one cannot be compelled to confess. इसका 3 एलिमेंट है ये बेनिफिट लेने के लिए। एक तो है one must be an accused of an offense, दूसरा है there must be element of compulsion, and compulsion must be to be a witness against himself. ये 3 अगर एलिमेंट है then you can claim कि हमको जबरदस्ती किया है मेरे अगेंस्ट, अपना अगेंस्ट में गवाही देने के लिए।
The protection is available only to the accused, not to any other witness. Witness को आप कंपेल कर सकता है, बाकी को नहीं. इसका अनुसार आप सेक्शन 132 इंडियन एविडेंस एक्ट देख लीजिए, 161 सीआरपीसी देख लीजिए, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट 179 आईपीसी देख लीजिए. उसका बाद नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. और भी नेक्स्ट, इसको भी हम लोग पढ़ लिया. हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट under the constitution or among all the fundamental rights, and according to me, of all human rights, most important is article 21, that is right to life. Article 21 provides protection of life and personal liberty. और वो क्या बोलते हैं आर्टिकल 21 को, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. उसका मतलब है कि अगर किसी का लाइफ और लिबर्टी को अगर छीनना है तो अथॉरिटी मस्ट फॉलो द प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. इसका काफी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आए थे अलग अलग. इसको मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा. इन 1950 सुप्रीम कोर्ट 27, ये है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था that जो established by law, follow the procedure established by law. इसका मतलब में इन्होंने ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, लॉ अंडर आर्टिकल 21 मीन्स लेक्स, यानी कि टेक्स enacted only, not jus. Jus मतलब principle of natural justice, and the expression due process of law under the Constitution of USA means just and proper due process. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस नहीं दिया है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिया है. इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उस समय ये बोला था, डेलिबरेट omission of word due from Article 21 lend strength to the contention that procedure established by law must be procedure prescribed by law of the state. इसलिए बोला कि ये जो लॉ है, प्रोसीड्यूर है, वो it will mean only the procedure prescribed by law of the land. लेकिन बाद में आफ्टर 28 years in 1970, ये है 1950 का केस था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था, सुप्रीम कोर्ट का 597. सुप्रीम कोर्ट ने ये ओवररूल किया द डिसीजन AK गोपालन केस को, एंड हेल्ड दैट प्रोसीड्यूर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ हैज टू बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, और मस्ट नॉट बी जस्ट प्रिंसिपल, आर्बिट्री और ऑपरेसिव. इसलिए प्रोसीड्यूर टू बी फेयर एंड जस्ट, जो पहले और बोला था कि जूस नहीं बोला था, चीफ टेक्स से बोला था, मस्ट एम्बॉडी द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. तो इसलिए आजकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज फॉलोड एवरीवेयर. ऑल प्रोसीड्यूर में प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, आपका क्रिमिनल लॉ हो, सिविल लॉ हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी प्रोसीडिंग्स हो, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हो, हम लोग जो पुलिस वाले हैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज भी करते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आप फॉलो करना ही पड़ेगा. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आज हमारा टॉपिक में नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूं. इसका मेनली दो प्रिंसिपल्स है, इसका दो मैक्सिम्स है. एक तो है नेमो जुडेक्स इन कॉजा शोआ. उसका मतलब है कि नेमो जुडेक्स मतलब नो वन शैल बी जज in his own cause. That means कोई भी अपना केस में या अपना रिलेटिव का केस में या कोई भी जहां में आप इंटरेस्ट हो उसमें आप जज नहीं बन सकते. आप कोर्ट में देखते हैं अगर कोई जज बैठता है तो उसमें उसका बेटा या बेटी या दामाद प्रैक्टिस नहीं कर सकता उसका सामने. ये सब. उसके बाद एक
दूसरा प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस ये है ओडी अर्थम पड़तम, यानी कि ओडी मतलब आपको मालूम है हियर, अर्थम पड़तम मतलब अदर साइड, हियर अदर साइड। दूसरा पार्टी को सुने बिना आपके फैसला नहीं दे सकते, यानी कि उसको भरपूर अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा अदर साइड को टू डिसाइड देयर राइट्स और देयर क्राइम्स। ये आप तो सब मालूम है प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड में ये आप ज्यादा आगे चला गया क्या? आप ज्यादा आगे चला गया, बहुत ज्यादा आगे चला गया। पीछे आइए, पीछे आइए प्लीज, पीछे आइए प्लीज। गुलता साहब थोड़ा पीछे आइए। स्लाइड नंबर, पेज नंबर 25 में आइए, पेज नंबर 25 में प्लीज। हेलो कोलिता जी, पेज नंबर 25। हाँ, मीनिंग ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट ने 1950 जो हमने जो बताया एक गोपालन केस में जो बहुत ही नैरो डिफिनिशन इंटरप्रिटेशन दिया था मीनिंग ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को। इसमें बोला था कि लिबर्टी ऑफ द पर्सनल बॉडी दैट इज फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन फ्रॉम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट रोम, ये दिया था। ओनली फिजिकल बॉडी का बारे में लिबर्टी ऑफ फिजिकल बॉडी बोला था। लेकिन एक गोपालन केस वाज ओवररूल्ड इन खरना सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जहां में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लाइफ का मतलब नॉट जस्ट मेयर एनिमल एक्सिस्टेंस। और अभी जो मैंने बताया इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ड पर्सनल लिबर्टी को बहुत ही वाइडन किया। उसने बोला राइट टू लाइफ इज नॉट मेयरली कन्फाइंड टू फिजिकल एक्सिस्टेंस बट इट इंक्लूड्स right to live with human dignity. Human dignity is also very important right. आपका मैं तो बोलूँगा some right to life still continues even after your death. उसमें कौन कौन है आप बता सकेंगे? मैं बाद में पूछूंगा आप लोग को कि कौन कौन सा राइट है जो राइट टू लाइफ है, which are the right to life, which are the various ingredients of life to life which exist even after your death. ये हम बाद में आपको डिस्कशन में करते हैं। उसके बाद आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही केसेस में इसको राइट टू लाइफ में बहुत लोग को इंक्लूड किया है, मेनी थिंग्स। तो इसको मैं आपको जंपिंग कर देता हूं। जैसे एक तो है, एक केस में 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है राइट टू लाइफ इंक्लूड्स रेपुटेशन एंड लाइवलीहुड। नेक्स्ट बोला है कि 1990 में राइट टू फूड, क्लोथिंग, डिसेंट एनवायरनमेंट एंड रीजनेबल इकोनॉमी, ये जो हमने रोटी, कपड़ा और मकान ये की बात करते हैं। इवन राइट टू LIC पॉलिसीज को भी बोला है कि इट इज इंक्लूडेड अंडर राइट टू लाइफ। राइट टू शेल्टर, उसके बाद राइट टू प्राइवेसी में सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में ये रूल किया कि टेलीफोन जो टेपिंग करता है वायलेट्स आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। नेक्स्ट 27, पेज 27, पेज 27 प्लीज, 27 प्लीज। कुलता साहब 27, पेज 27। नेक्स्ट प्लीज। अरे कोई है? हाँ। और एक में 1994 में ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू बी लेट अलोन, अकेला जीने का भी आप हक है। और राइट टू मेडिकल एड, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हॉस्पिटल लोग बोलते थे कि नहीं आपका एक्सीडेंट केस है या मारपीट का केस है, आपको गोली लगा या पुलिस को पहले बताना पड़ेगा, वो नहीं होगा। 1989 में ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नहीं हॉस्पिटल नॉट टू वेट फॉर लीगल फॉर्मेलिटी, ये क्लियरली बोला है। उसके बाद
1993 में राइट टू एजुकेशन को भी राइट टू लाइफ में दिया है। लेकिन अभी आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में राइट टू एजुकेशन को अलग आर्टिकल दे दिया है, आर्टिकल 21A, मतलब जो आर्टिकल 21 से जन्म हो गया आर्टिकल 21A। उसके बाद राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। इसमें आपको पता होगा कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, ये भी इसमें दिया है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट एक तो राइट था, ये राइट टू लाइफ इंक्लूड्स बैन ऑन स्मोकिंग। आपको पता है पहले स्मोकिंग तो अलाउड था, लेकिन इन मुरली एस देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2002 से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं स्मोकिंग पब्लिक प्लेसेस में नहीं होगा, ये इट इज अगेंस्ट राइट टू लाइफ, क्योंकि राइट टू लाइफ के लिए आपको फ्री पोल्यूशन फ्री वाटर एयर चाहिए, तो आपको स्मोकिंग इज अगेंस्ट पोल्यूशन, मतलब अगेंस्ट पोल्यूशन फ्री एयर। तो इसलिए सभी स्टेट को, यूनियन ऑफ इंडिया को, यूटीज को डायरेक्शन दिया था कि स्मोकिंग को पब्लिक प्लेसेस में बैन कर। इवन राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू बेल। इवन इन मर्डर केस अगर बेल को रिफ्यूज करता है विदाउट गिविंग रीजंस, उसको बोला है इट इज अगेंस्ट राइट टू लाइफ। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद एक तो राइट है राइट टू स्पीडी ट्रायल। बोला है कि अगर स्पीडी ट्रायल नहीं होता है वो अनरीजनेबल है। उसके बाद एक तो है राइट टू फ्री लीगल सर्विसेज। उसमें बोला है सुप्रीम कोर्ट में 1996 में अगर प्री लीगल एड प्रोवाइड नहीं किया एंड अनडिफेंडेड अंडर ट्रायल को, इट वुड विटिएट द ट्रायल, इट मीन्स ट्रायल इज रॉन्ग। उसके बाद आपको पता है अगेंस्ट सोलिटरी कन्फाइनमेंट, और उसके बाद आपका राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, राइट अगेंस्ट थर्ड डिग्री, राइट अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट, ये सब भी दिया है। इस पर शायद हमारे जो नेक्स्ट आपका रेस्पेक्टिव लेक्चरर वो बात करेंगे, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। उसके बाद राइट टू प्राइवेसी को भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इट इज वेरी इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। और बोला है कि इट प्रोटेक्ट्स इनर स्फीयर ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम इंटरफेरेंस ऑफ बोथ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। ये है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसके बाद आइए, आपका राइट टू लाइफ को इमरजेंसी में सस्पेंशन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो लेट अस डिस्कस इमरजेंसी एंड आर्टिकल 21। पहले प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 359 में इमरजेंसी में आर्टिकल 21 को सस्पेंड करते थे, लेकिन एक केस में इन 1976 जब इमरजेंसी लगा था इंदिरा गांधी का था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इन हेवियस कॉर्पियस केस कि राइट टू लाइफ अगर नहीं होगा, इफ इट इज सस्पेंडेड, हाउ कैन वन पर्सन गो टू द कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ दैट राइट। आपको पता है आर्टिकल 22 हम लोग अभी आएंगे, उसमें दिया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दैट मीन्स इफ योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, you can approach the Supreme Court or any court for enforcement or for directing the state not to interfere in the fundamental rights। अगर आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आप अगर इधर उधर घूम नहीं सकते, और इफ यू कैन नॉट एक्सरसाइज आर्टिकल 21, दैट मीन्स यू कैन नॉट इवन एक्सरसाइज आर्टिकल 32, तो ये तो नहीं होगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नो यू कैन नॉट सस्पेंड आर्टिकल 21। उसके बाद पार्लियामेंट ने आफ्टर इमरजेंसी दे ब्रॉट वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट एक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद इवन अंडर आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट सस्पेंड आर्टिकल 20 and 21, अब इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये आपको जानना है। ये ऑलरेडी हाँ, आर्टिकल 22 ये थोड़ा डबल हो गया इसको। आर्टिकल 22 जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सिटीजन एंड नॉन सिटीजन फॉरेनर को भी
अवेलेबल है। आर्टिकल राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ, ये जो आपका एरेस्ट का बारे में आपका जो नेक्स्ट आई थिंक विल टॉक अबाउट, तो इसलिए ये आर्टिकल 22 का बारे में बस वही है कि इसमें क्या क्या राइट्स हैं। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना है, डिफेंडेड और लीगल प्रैक्टिशनर इज स्वीट, और मजिस्ट्रेट का नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में प्रोड्यूस करना है, और 24 आवर्स ज़्यादा कस्टडी में नहीं रख सकता है विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, ये सब है। उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ अलाउज प्रिवेंटिव डिटेंशंस, जो है आपको मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन है कि बिफोर कमिटिंग एनी क्राइम यू कैन बी प्रिवेंटिवली डिटेन्ड। तो इसके लिए है रीजन्स है, इसमें 5 रीजन्स। डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स के लिए, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और स्टेट, पब्लिक ऑर्डर के लिए, या एसेंशियल सर्विसेज एंड सप्लाई, ये के लिए आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकता है। सम ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज आर, आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, ये है मिशा है 1970, ये सब NSA है, तादा है, ये सब में आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हो सकता है। लेकिन सेफ गार्ड है अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन, आपको 3 मंथ से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं कर सकता है अनलेस अप्रूव्ड बाय एडवाइजरी बोर्ड। आपको ग्राउंड ऑफ डिटेंशन बताना पड़ेगा, और आपको डिटेंशन होने से पहले अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा रिकमेंडेशन के लिए, और किसी भी हालत में मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन जो सर्टेन लॉ में दिया है उससे ज्यादा आपको नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे जो अदर 4 राइट्स है, दे आर नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका आर्टिकल 23-24 में दिया है, यानी कि आपको फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता है, स्लेवरी नहीं हो सकता है। रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपका आर्टिकल 25-28 दिया है कि आप यू आर फ्री टू चूज एनी रिलीजन, प्रैक्टिस एनी रिलीजन, प्रोपेगेट योर ओन रिलीजन, वो है। आर्टिकल ये जो हम लोग फिफ्थ ग्रुप में कल्चरल एंड एजुकेशन राइट है, आर्टिकल 29-30 है आपका, ये है आपको पता है, आप अपना लैंग्वेज स्क्रिप्ट ये सब आप प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन आपको एजुकेशनल राइट जो है, राइट टू एजुकेशन, एक अलग से आर्टिकल 21A आपको जो बताया वो आ गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32-35 है, 35 है, वो आपको ऑलरेडी बता दिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये आपको दिस इज लाइक आर्टिकल 23-27 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। उसके बाद ये बस इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इधर खत्म होता है। और आर्टिकल 32 को इसलिए एक्सरसाइज करता है कि फंडामेंटल राइट्स को इवन कोई स्टेट अथॉरिटीज आपका वायलेट नहीं कर सकता है एक्सेप्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी में भी आर्टिकल 20 एंड 21 को सस्पेंड नहीं कर सकता है, और कोई असेंबलीज या पार्लियामेंट ऐसा कानून नहीं बना सकता है which are contrary to the provisions here in part 3। वो है आपका पार्ट 3 का स्टार्टिंग में एक आर्टिकल 13 है जिसको हम लोगों ने नहीं बताया अभी। आर्टिकल 13 बोलता है कि कोई भी लॉ बनाता है पार्लियामेंट और असेंबली, इफ इट इज contradictory to the provisions of any fundamental rights, it shall be void। वो है, इसलिए इसको 32 को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स रिगार्डिंग ह्यूमन राइट। इसको हम लोग जंपिंग मारेंगे क्योंकि हम लोग का टाइम ऑलमोस्ट खत्म ही हो रहा है। तो क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमने कवर कर दिया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड हमारा फंडामेंटल राइट्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में, तो इसको हम लोग जंपिंग मारते हैं, नहीं तो हमारा टाइम नहीं होगा। यहाँ मेनली 2 इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स है, जिसको एक को बोलता है इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स व्हिच आर लाइक फंडामेंटल राइट, बेसिक राइट्स। Another है इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। And all these 2 covenants along with Universal Declaration of Human Rights, 3 are called International Bills of Human Rights। These 3 are very important international documents on human rights। So human rights provided under the International Covenant on Civil and Political Rights, you know, वो है आपका ये सब 1966 का है, इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स।
इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये 1966 है। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, ये भी 1966 का है। तो इसमें आपका मोर और लेस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जैसा ही है। तो आर्टिकल 1 सेल्फ डिटर्मिनेशन, आर्टिकल 2 without any discrimination, protection against discrimination, article 3 equal right of men and women, article 4 derogation, article 4 or 5 also, article 6 right to life, yes of almost hey, article 7 protection against torture or cruelty, article 8 salary, article 9 right to liberty and security, पर ये already है, already we have covered this also, article 10 personal protection of liberty, no one shall be imprisoned mainly for failing to pay debt, ये सब है। article 12 freedom of movement, article 13 article 14 equal before law, equality before law ये है। एंड इसमें सब कुछ है, presumed innocent भी है, and no one shall be compelled to testify against him। ये आर्टिकल आपका जो हम लोग का 20 का है वो सब भी दिया है। ये है आर्टिकल 15 प्रोटेक्शन एक्सपेक्ट लॉ, ये सब है। आर्टिकल 16 रिकॉग्नाइज एज ए पर्सन, राइट टू बी रिकॉग्नाइज एज ए पर्सन। आर्टिकल 17 राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल 18 फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, ये जो रिलीजन है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन। आर्टिकल 20 प्रोपेगेंडा फॉर वॉर या हेट स्पीच नहीं होगा। आर्टिकल 21 राइट टू पीसफुल असेंबली। आर्टिकल 22 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। Article 23 all adults have right to marry, already we have discussed. Article 24 protection of children. Article 25 citizen to take part in public affairs, voting का right है। Article 26 equal before law, यानी कि equal protection of law, equality before law. Article 27 cultural right, ये है उसका international covenants राइट्स कवर्ड अंडर कोवेनेंट इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट। ये आपका इसमें भी ज्यादा आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल 1 सेल्फ डिटर्मिनेशन। आर्टिकल 2 ये रिसोर्सेज को सबको इक्वली एक्सरसाइज करने देना है। आर्टिकल 3 इक्वल राइट्स ऑफ मेन एंड वुमेन, ये ऑलरेडी दिया है। आर्टिकल 4 जनरल वेलफेयर। Article 5 no one to destroy these rights. Article 6 right to work. Article 7 right to just condition of work, fair wages, ये already equal pay for equal work, healthy working condition, equal opportunity for everyone to be promoted, less and leisure, ये सब है। Article 8 right to form and join trade unions. Article 9 social security. Article 10 marriage with pre-consent of both parties. Article 11 adequate standard of living. Article 12 enjoyment of highest attainable standard of physical and mental health. Article 13 right to education, ये already बताया आपको। Article 14 pre primary education, cultural right. Article 20 बस इतना है आपका। बस अभी हम खत्म ही कर लेते हैं, हमारा टाइम भी नहीं है। आपको नेक्स्ट हमारा था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। इसमें हमको मेन प्रोविजन क्या है, कंपोजिशन क्या है, वो हमको बताना है। ए है इंपॉर्टेंट प्रोविजन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। मेनली इसका एक्ट इसका एम है टू कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन राइट कमीशन एट सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल, एंड ऑल्सो ह्यूमन राइट कोर्ट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये और दिस वाज enacted by Parliament in 44th year of Republic of India, यानी 1994, 8 जनवरी 1994, ऐसे नाम तो दिया है Human Rights Act 1993। Important provision mainly ये है, इसका around 8 चैप्टर से, इसमें आपका सेक्शन 1, 2 आप देखेंगे, 2 में डिपिटिशन है, 3 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सेक्शन 3 to 11, 3 में फंक्शंस एंड पावर ऑफ कमीशन यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 12 to section 12 to 16,
सेक्टर 4 में प्रोसीड्यूर, सेक्टर 5 में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेक्टर 6 में ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स, सेक्टर 7 में फाइनेंस अकाउंट, सेक्टर 8 में मिसलेनियस। अभी हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसमें आपको पता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का 8 मेंबर होता है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा। 8 मेंबर में से एक है रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना पड़ेगा। इसमें 8 मेंबर में से 5 रेगुलर मेंबर हैं, 3 डीम्ड मेंबर्स। आप नेक्स्ट में भी जाइए, ये हो गया। नेक्स्ट में जाइए, नेक्स्ट में जाइए, लास्ट में बी में जाइए, बी में जाइए, प्लीज बी में जाइए, बी में जाइए, कोलकाता साहब बी में जाइए, और भी जाइए आगे, और आगे जाइए। हाँ, आप चौकन न रहिएगा क्योंकि अभी हमको जल्दी जाना है ना, इसलिए आगे जाइए ना। हो गया, आगे जाइए ना, ये हो गया। हाँ, इसमें रखिए। तो इसमें 8 मेंबर्स में से 5 रेगुलर मेंबर्स हैं और 3 डीम्ड मेंबर्स हैं। 5 रेगुलर मेंबर्स में से अगेन 3 जुडिशियल बैकग्राउंड का है और 2 ऐसे प्राइवेट पर्सन्स होगा हु आर एक्सपीरियंस इन ह्यूमन राइट्स। तो इसमें फर्स्ट जुडिशियल मेंबर में ये होगा चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा। एक मेंबर होगा या तो रिटायर्ड या सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। थर्ड मेंबर होगा रिटायर्ड और सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट। ये 3 जुडिशियल मेंबर्स हैं और 2 मेंबर्स होंगे जो पब्लिक में से अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद 3 डीम्ड मेंबर्स उन लोग होता है, 4 डीम्ड मेंबर्स उन लोग होता है। 4 होगा, इसको गलती से 3 कर दिया, 4 लिख लीजिएगा, इट इज 4। नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर द एससीज मतलब शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर द एसटीज। पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक होता था, अभी अलग हो गया है, तो इसलिए अभी इसको 4 बोलना पड़ेगा। एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये है 4 डीम्ड मेंबर्स। उसके बाद एक सेक्रेटरी जनरल होगा हु विल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और हेडक्वार्टर दिल्ली में होंगे। एंड द कमीशन कैन एस्टैब्लिश offices at other places in India with the approval of the central government. हाँ, उसके बाद ये है functioning section 12. Commission shall perform all or any of the following functions. Mainly 10 function इसका। एक तो है inquire करना so moto or on petition by victim or on his behalf or on direction or order of the court into violation of human rights or amendment in or negligence in the prevention of such violation by a public servant। ये पर वो सो मोटो इंक्वायर कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है कोई भी प्रोसीडिंग्स रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट में वो इंटरवेन कर सकता है विद द अप्रूवल ऑफ सच कोर्ट, इसमें सच कोर्ट। उसके बाद कोई भी जेल को विजिट एनी जेल, नेक्स्ट फंक्शन है, और इंस्टीट्यूशन अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जहां पे पर्सन को डिटेन किया हो या लॉन्च किया है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट, रिफॉर्मेशन और प्रोटेक्शन। तो इसका लिविंग कंडीशन ये सबको स्टडी करेंगे एंड देन दे विल रिकमेंड। उसके बाद 4th फंक्शन है सेफगार्ड प्रोवाइडेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको स्टडी करेंगे, रिव्यू करेंगे, और एनी लॉ फॉर टाइम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और उसमें और कुछ और मेजर्स रिकमेंड करना है वो करेंगे। एंड 5th फंक्शन है रिव्यू द फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट ऑफ टेररिज्म दैट प्रिवेंट द एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसके बाद वो उस पर वो रिकमेंड कर सकता है। उसके बाद 6th फंक्शन है स्टडी ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑन ह्यूमन राइट, जैसे हमने अभी बताया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल कॉन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कॉन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल राइट, ये सब में वो स्टडी कर सकता है। उसके बाद देन रिकमेंड कर सकता है। एंड नेक्स्ट फंक्शन है
उन लोग रिसर्च करेंगे या रिसर्च को प्रमोट करेंगे इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसका नेक्स्ट फंक्शन है स्प्रेड ह्यूमन राइट लिटरेसी among various sections of society and promote awareness of the safeguard available for the protection of human rights through publication, media, seminars and other available means। ये है जैसे आज हम लोग कर रहे हैं, ये ह्यूमन राइट लिटरेसी को हम बढ़ा रहे हैं, ये भी एक इन लोग का काम है। नंबर एंड नेक्स्ट है एनकरेज एफर्ट ऑफ एनजीओज एंड इंस्टीट्यूशंस वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन, इनको भी वो एनकरेज करना है। और एनी अदर फंक्शन जो नेसेसरी लगता है फॉर प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये है इनका मेन फंक्शन। उसका बाद स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का 3 मेंबर्स होते हैं। इसको स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन उसको बोलते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो सकता है। इसमें एक चेयरमैन होगा जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होगा, और 1 मेंबर होगा जो रिटायर्ड जज होगा हाई कोर्ट का या सिटिंग जज होगा हाई कोर्ट का, और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज या सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज विथ मिनिमम 7 years एक्सपीरियंस वो होगा। उसके बाद 1 पर्सन जो नॉलेज हो या एक्सपीरियंस हो इन ह्यूमन राइट्स में। ये इसका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का 3 मेंबर्स होता है, जिसमें 2 जुडिशियल मेंबर है और 1 अदर मेंबर है। और इसका भी एक सेक्रेटरी होगा जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, और हेड क्वार्टर कहीं भी लगा सकता है स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद इसका फंक्शन स्टेट कमीशन में इंक्वायरी इनटू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ मैटर रिलेटेड टू एनी ऑफ द एंट्रीज enumerated in list 2 and 3 in the 7th schedule of the constitution। अच्छा, आपको पता है ये लिस्ट 2 and 3 ये क्या है? आपको पता है जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी ये जैसे पुलिस है, वो पुलिस स्टेट सब्जेक्ट में आते हैं लिस्ट 2 में। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट ये हमारा 7th शेड्यूल में दिया है। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट हैं, एंड लिस्ट 3 विच इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्करेंट लिस्ट 47 सब्जेक्ट हैं। तो आपका जिस तरह के आपका पार्लियामेंट लॉ बनाते हैं यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स में, या सेंट्रल गवर्नमेंट वो सब एनफोर्स करते हैं 97 सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट 66 सब्जेक्ट जो लिस्ट 2 में दिया है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और लिस्ट 3 में दोनों कर सकते हैं, पार्लियामेंट भी, असेंबली भी, इसी तरह का आपको ये दिया है। बस इतना में हम लोग खत्म करते हैं, मेरा ख्याल से टाइम भी खत्म हो गया। थैंक यू एवरीबॉडी, एंड इंस्टेड ऑफ 15 मिनट्स आई थिंक इफ पॉसिबल वी कैन हैव 1-2 minutes provided PTC gives us the permission, or कोई anyone now you can unmute yourself if you want to ask question, rest may remain mute। any question? नहीं तो इनका चेहरा तो दिखा दीजिए कोलिता सबका थोड़ा प्लीज। show me who are there, around 20-30 of them are there I think from the police officers. Yes, anyone? Yes sir। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। This is from SI Tawa Chokar। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए तावा चौक। सर ये राइट टू प्राइवेसी का एक्सप्लेन करें सर। हाँ, राइट टू प्राइवेसी मतलब आपका प्राइवेट अफेयर्स में, प्राइवेट मैटर्स में आपको कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। इट इज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। जैसे आप अगर कपड़ा पहन रहे हैं या आप कमरा का अंदर बैठ रहे हैं तो इसमें आप कोई जाक टोक नहीं कर सकता है, या आप जो व्हाट्सएप में टेक्स्ट करते हैं या आप फोन पे बात करते हैं
तो विदाउट योर अप्रूवल, विदाउट योर कंसेंट कोई उसको लेना नहीं चाहिए until unless it is required for certain specific purpose like investigation and something. Otherwise, without any ground, reasonable ground, उसमें आप कोई जांच तोक नहीं कर सकते। जो मैंने आपको पहले बताया, राइट टू लाइफ में इवन एग्जिस्ट आफ्टर योर डेथ, उसमें आपको राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी आएगा। राइट टू प्राइवेसी क्यों है? जैसे आपको कपड़ा पहन के आप मरते हैं तो आपको विदाउट एनी रीजन आपको नंगा संगा नहीं कर सकता है। इट इज अगेंस्ट योर प्राइवेसी ऑल्सो एंड अगेंस्ट योर डिग्निटी ऑल्सो। जैसे पोस्टमार्टम करता है, दैट इज ए सर्टेन रिक्वायरमेंट, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। उसमें भी आप ओपनली ओपन ग्राउंड में पब्लिक प्लेस में पोस्टमार्टम नहीं करते थे, क्लोज डोर में करना पड़ेगा ताकि जो स्पेसिफिक पर्सन ही करे रिक्वायर्ड अंडर द लॉ। अदरवाइज कोई विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन आपका प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं कर सकते। सर जैसे हम लोग एक इन्वेस्टिगेशन में किसी क्रिमिनल का अगर हम लोग फोन सीज करें, किसी को उसका इन्फॉर्मेशन या कुछ भी से रिकवर करने से वो लोग प्राइवेसी में हम लोग क्लेम नहीं करेगा। नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन, बहुत सी इन्वेस्टिगेशन में आप अलाउड है। इवन जो आपको जो राइट टू इंफॉर्मेशन में भी आप अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, आप नहीं देता है ना, वो टाइप का इसका विपरीत है ये। तो इन्वेस्टिगेशन पर्पज के लिए आप कर सकते हैं। और इवन टेलीफोन टेपिंग, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था टेलीफोन टेपिंग इज अगेंस्ट राइट टू प्राइवेसी, इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। लेकिन टेलीफोन टेपिंग को भी इन सर्टेन केसेस में अलाउड है, इवन सुप्रीम कोर्ट अलाउड है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बस वो है कि अभी जैसे हमारे यहाँ पे सर्टेन लेवल तक कितना मिनट का टेपिंग करना है, कितना दिन का टेपिंग करना है, वो सब अनुसार आपको अप्रूवल जो है सर्टेन हायर लेवल से लेना पड़ता है, जैसे कमिश्नर फॉर्म या ऐसा कुछ लेना पड़ता है। ओके, एंड एनीथिंग, एनीवन? हैंडकफिंग, अरेस्ट, टॉर्चर, थर्ड डिग्री, ये सब तो आपका नेक्स्ट लेक्चरर बताएंगे शायद, क्योंकि उनका टॉपिक में हमने देखा था। एनीवन, एनीबॉडी एल्स? कुलता साहब, एनीबॉडी एल्स? Sir, personally, I would like to know from you what about the State Human Rights Commission of Arunachal Pradesh, sir? I think recently they have constituted State Commission for Protection of Child Rights. They are yet to constitute, I think, State Commission for Human Rights. They have already constituted State Commission for Women. Arunachal Pradesh State Commission for Women, they have already constituted, but I think they are on way to constitute Human Rights Commission in this state. Thank you, sir. Thank you. Hope everybody gained something from today's topic. Thank you. We discussed it very detailed. Thank you. Sir, thank you, sir, and all the participants. Thank you for attending this